Hello everyone, good evening. So we are back in live again with the Emerge batch, and today we are going to discuss about the second part of your human reproduction. ठीक है? तो आज हम second part को discuss करेंगे, and that too with the coverage of some of the important aspects and important you can say topics as well. All right. तो उसके बारे में हम आज डील करेंगे. So we have already dealt and discussed with topics that is related to your male reproductive system, female reproductive system, menstrual cycle, and then specifically your spermatogenesis. इसके बारे में हम already deal कर चुके थे. Now today we are going to talk and deal about a very important topic, and that is going to be the oogenesis. So क्योंकि comparative study हम करेंगे, so that is going to give us an analysis that how exactly the process of spermatogenesis is actually different from the process of oogenesis. All right, so let us move ahead with that part. Here, so we have already discussed the section of the seminiferous tubules as well. वो भी हम discuss कर चुके थे, तो ये वाला part हो जाएगा. Like this. All right. So hormones and all already हम discuss कर चुके थे. Now let us first talk about the sperm structure. पहले मैं sperm structure के बारे में आपको details में बता देती हूँ, and then we will be discussing about the process of oogenesis. All right. Now basically sperm structure की जब हम बात करते हैं, तो sperm is basically considered to be as the human male gamete, है ना? So we know that sperm is considered to be as the male gamete. And जब हम humans में male and female gamete को consider करते हैं, so they are morphologically and physiologically distinct as well. दोनों ही ना shape में, size में बहुत ही distinct होते हैं. That's why humans are actually considered to be as heterogametes. So humans जो होते हैं, वो heterogametes के category में आते हैं. या heterogametic होते हैं, basically हम कह सकते हैं. Heterogametic means what? The male gamete is entirely different from the female gamete. बहुत ही अलग होता है. So you can see the structure over here as well. So let us just examine the structure of the sperm over here. So basically sperm का जो structure होता है, this is basically a microscopic structure which is composed of head, neck, middle piece and tail. है ना? तो head होता है, neck होता है, middle piece होता है and tail हो जाएगा. Clear? So you can see that this portion is the head portion. Central का एक portion होता है that connects the middle piece with that of the head, then that is called neck. Then the third one is the middle piece, and of course the last component is the tail portion or the tail component. Clear? Now the next thing to note is that कि इस structure में इसकी functionality, इसका structural configuration is so much unique, इतना unique होता है, so that the penetration of sperm inside the egg is very convenient, है ना? ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? So a plasma membrane envelops the whole body of the sperm, ठीक है? Plasma membrane जो होता है, ये पूरे body जो होता है sperm का, उसको ये cover up करके रखता है. So you can see a plasma membrane here also that covers up the entire structure of the sperm. Now, sperm head usually contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure that is called acrosome. तो देखो, जब हम head की बात करते हैं, या जब हम sperm head की बात करेंगे ना, तो sperm का जो head होता है, it basically has two components. एक तो acrosome होता है उसके अंदर,
मतलब जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट होगा, दैट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ एक्रोसोम, ठीक है. एंड जो just behind to acrosome, you can say, on the anterior portion is a very very important component, and that is called nucleus. तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है, that is considered to be as the nucleus. तो दो important पार्ट होते हैं स्पर्म के हेड के, acrosome and the nucleus. So acrosome जो होता है, this basically contains digestive enzymes. This usually contains digestive enzymes. All right, for digesting the egg cell membrane. While nucleus, on the other hand, this basically contains the chromosomal or genetic material, you can say. So this contains genetic material. So this is the piece. Clear? Now, अब ये जो digestive enzymes होते हैं, इनका nature इस तरीके का होता है that there are two specific digestive enzymes which are found in them. One is called as the hyaluronidase, and the other is called as acrosome. Hyaluronidase and acrosome. ये आपको ध्यान में रखना है because this is very very important. This is going to lyse the ovum और egg cell membrane को ये lyse करने में basically help करेगा, so that the penetration or the entry of the sperm inside the ovum becomes very convenient. ठीक है? So the acrosome is filled with enzyme that helps in fertilization of the ovum, while जो middle पीस होता है, इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. ये तो स्पर्म हेड की बात हो गई, इसमें जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम हो जाएंगे. बट व्हाट अबाउट द मिडिल पीस? मिडिल पीस वाला जो पोर्शन आपको दिखता है ना, जो ये वाला पोर्शन आपको दिखता है, दिस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत सारे इनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनमें फाउंड आउट होते हैं, दैट इज बीइंग एक्चुअली प्रेजेंट. एंड समझ लीजिए कि जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होगा, उतना ही ज्यादा जो मूवमेंट होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म एंड फॉर द मोटिलिटी ऑफ द टेल टू द स्पर्म एज वेल. ठीक है, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे, देयर इज अ मॉडल ऑफ स्पर्म बीइंग रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, व्हिच यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, तो एक ओवरऑल आपको एक जिस्ट मिल गया है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, so this becomes basically, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये हेड का पार्ट है ना, ये वाला हेड का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, this part becomes the neck part. These are the mitochondria which are found in the middle piece. So ये mitochondria है which are numerous in number in middle piece. Clear? And this becomes the tail. ये वाला पोर्शन हो जाएगा. ठीक है, so this is how the configuration or model of the sperm is being represented over here. ठीक है, like so middle piece numerous mitochondria को contain करेगा, which produces energy for the movement of tail, so that can facilitate the sperm motility that is essential for fertilization. क्योंकि हमें मालूम है कि sperm को अगर पहुंचना है ovum तक, so definitely that requires energy, and that energy will be provided to the sperm only via mitochondria, जो कि ATP के फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, and so that the movement of the tail will be very very convenient. ठीक है ना, ये आपका पूरा जो है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनैलिटी यहाँ पे जो कि मेंशन हो गया पूरा स्पर्म का. Now ह्यूमन मेल में जो इजैकुलेशन का प्रोसेस होता है, that ejaculates around 200 to 300 million sperms during the coitus process or during the copulation process for the normal fertility that I am talking about. ठीक है, जिसमें कि 60% होने चाहिए, मतलब इजैकुलेशन के टाइम पे 200 to 300 million sperms होते हैं, बट उसमें से 60% sperms ऐसे होने चाहिए that should have a normal shape and size, and at least 40% of them should have the should show in fact the vigorous motility. मतलब उनका जो motility होना चाहिए, उनमें जो movement होना चाहिए, the way they move or the way they travel towards the sperm, that should be very very vigorous. तो ये part आपको ध्यान में रखना होगा, because this has been asked also in the examination. Now sperms which are released from the seminiferous tubules,
they are transported by the accessory ducts. वो accessory ducts के थ्रू जाएंगे जो हमने already देखा था. Now जितने भी ये ducts होते हैं ना, ducts में जो secretions होता है वो accessory glands का आता है, ठीक है. तो secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostrate gland, they are essential for maturation and motility of sperm के लिए important है. The seminal plasma along with the sperm constitutes the semen. All right. तो sperm के साथ अगर हम seminal plasma को include कर ले, which is a combination, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था, which is a combination of fructose, calciums, enzymes, prostaglandins, fibrinogen, इन सारी चीजों का जो ये combination होता है ना, ये पूरा का पूरा एक altogether summation होता है, ठीक है. तो functions of male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones, which are called androgens, ठीक है. So whether it's a semen secretion, whether it's the sperm formation, all these entire processes being regulated by the by the testicular hormones, which are released by the lady got the interstitial cells. तो ये आपको ध्यान में रखना है. So this is about the sperm structure that we have seen. Now let us just take a look into the process of oogenesis, है ना. तो oogenesis के process को show करने के लिए मुझे आपको सबसे पहले इनके लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So let me first explain you the life cycle of this oogenesis through the flow chart, and then we can move on with the content part. ठीक है. See over here. यहाँ पे आप देखिए. So oogenesis basically process जो होता है oogenesis का, clear? Oogenesis is basically the process of ovum formation. इसमें ovum का formation होगा या egg का formation होता है from oogonia or oogonial mother cell, you can say. Now this oogonia, this is naturally diploid, तो definitely ovum जो बनेगा वो meiosis से बनेगा. So this will be the case. Clear? So process of ovum formation from oogonia or oogonia mother cells via meiosis, that is called oogenesis. Now oogenesis का जो सबसे important चीज नोट करने वाली बात होती है वो ये, that it basically starts during the embryonic development itself. जब बेबी फीटस में ही रहता है, मदर के फीटस में ना, सो वहीं से ये प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो जाता है. सो दिस बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. बट स्पर्मेटोजेनेसिस का आप देखेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है, वो शुरू होता है फ्रॉम प्यूबर्टल स्टेज. दैट मींस व्हेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड इन केस ऑफ द मेल्स दैट व्हेन वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, तो ये वाला बात. So इसमें जब हम देखेंगे तो oogonia जो होता है, oogonia which is already diploid in nature, this is going to undergo the process of mitosis differentiation. ठीक है, इसमें mitosis differentiation होगा, मतलब this is going to mature itself, increase its number itself. So when it will be maturing or increase its number itself, so that will get converted into a structure which is called primary oocyte. तो ये mature करके ultimately अपने आप को primary oocyte में convert करेगा. तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस होता है ना, मतलब कन्वर्जन ऑफ oogonia टू प्राइमरी oocyte, ये फीटल के लाइफ में ही हो जाता है. मतलब जब बेबी मदर की वुम में होती है इन द फॉर्म ऑफ फीटस, उसी टाइम पे ये प्रोसेस जो होता है पूरा हो जाता है. ठीक है. नाउ वंस दिस प्राइमरी oocyte आर फॉर्म ना, दे आर गोइंग टू अरेस्ट देमसेल्व्स. ये अपने आप को क्या करेंगे, ये अपने आप को अरेस्ट कर देंगे. अरेस्टेशन होगा, अरेस्टेशन तब तक होगा जब तक ये प्यूबर्टी नहीं आ जाती या बर्थ नहीं हो जाता. ठीक है. तो प्राइमरी oocyte फिर उसमें फर्स्ट meiotic, this is the primary oocyte that you can see over here. Now this will undergo the first meiotic division over here, you can see, ठीक है, which is completed prior to the ovulation process. Ovulation से ये पहले ही complete होता है. ठीक है. तो ये जब first meiotic division करेगा तो definitely this is going to produce the two cells. दो क्योंकि first meiotic division unequal division होता है, तो you can see over here कि इससे ये दो सेल्स को प्रोड्यूस करता है.
One is called as the secondary oocyte, which is a bigger cell, and the other is called as the first polar body, which is a smaller cell. तो ये अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा. अब डिवीजन होना है, एक्चुअली में पोलर बॉडीज का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो उसको डिवाइड करके दो सेल बनाना ही है. सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी oocyte बिगर बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा सा बनता है. नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस इज गोइंग टू फर्दर undergo the process of second meiotic division to give rise to ovum, clear, and your second polar body. So that is the case with the oogenesis process. अब इसमें जो बात नोट करने वाली बात है, ये तो दिखने में बहुत सिंपल लगता है कि oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte का डिवीजन हुआ तो वो सेकेंडरी oocyte बना दिया, सेकेंडरी oocyte का सेकेंड meiotic डिवीजन हुआ तो वो second polar body and ovum बना दिया. But there, though it seems to be very simple, but it is not as such simple. ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, देखिए oogonia से प्राइमरी oocyte तो बन जाएगा, क्लियर. oogonia से प्राइमरी oocyte बन जाएगा, which is this is also diploid and this is also diploid. And जैसे प्राइमरी oocyte बनता है ना, this primary oocyte actually arrests itself. इसका अरेस्टेशन होता है at prophase 1 of meiosis 1 में. So this is going to arrest itself at the prophase 1 of meiosis 1. Clear? That is the case. अब जैसे ही इसकी मेच्योरिटी अटेन होगी ना, तो ये प्राइमरी oocyte के अराउंड में ग्रैन्युलोसा सेल्स का डिपोजिशन शुरू हो जाता है. सो ग्रैन्युलोसा सेल्स स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग, एंड वंस द ग्रैन्युलोसा सेल स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग, तो ये सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो होगा प्राइमरी फॉलिकल. क्लियर? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनेगा. टर्शरी फॉलिकल अल्टीमेटली बनेगा. नाउ दिस टर्शरी फॉलिकल, दिस कंटेन्स द प्राइमरी oocyte. इसके अंदर में प्राइमरी oocyte है, तो जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बना, तो ये जो प्राइमरी oocyte होगा इनसाइड द टर्शरी फॉलिकल will now undergo the process of division. तो ये जो पूरा तीन जो स्टेज यहाँ पे बना है ना, ये सक्सेसिव स्टेजेस बनने जरूरी है. ठीक है, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल इज द मैच्योर्ड फॉलिकल जिसके अंदर में प्राइमरी oocyte होता है. Now this primary oocyte will undergo the process of first meiotic, or it will complete the process of first meiotic division. So now this primary oocyte completes फर्स्ट meiotic division. तो जब ये फर्स्ट meiotic division को कंप्लीट करेगा, which is actually an unequal division, तो इससे फिर सेकेंडरी oocyte हमारा बनता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा. सो सेकेंडरी oocyte along with a smaller first polar body is formed. So इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना, वो कैरिड आउट होता है. सो मैंने आपको बोला ना कि दो दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बट दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. क्यों? क्योंकि प्राइमरी oocyte से लेकर के सेकेंडरी oocyte के जर्नी तक जो फॉलिकल्स बनते हैं बीच में ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज हमें नोट करने वाली बात है. ठीक है, कि प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के सेकेंडरी फॉलिकल तक, प्राइमरी oocyte से लेकर के सेकेंडरी oocyte के बीच में जितने फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, वो मैच्योरिंग स्टेज हो रहा है. तभी जाके फर्स्ट meiotic division जो होगा, that is going to complete itself. उसी का completion होगा, and that's how the process of oogenesis ultimately gets completed. ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा. अब एक बार we are going to look into the explanation. You can see. You can see that the process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from the spermatogenesis.
Now this oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage, जो मैंने आपको already बता दिया था कि embryonic development stage में शुरू होगा when a couple of million gamete mother cells, that means oogonia or oogonial mother cells, they are formed within each fetal ovary. ठीक है, no more oogonia, they are formed and added after birth. मतलब एक बार जितने नंबर ऑफ oogonia बन जाते हैं उसके बाद कोई भी फर्दर एडिशन नहीं होता है oogonia का या oogonial mother cells का. Now these cells, they are going to start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and gets temporarily arrested at that phase, which is called primary oocyte. तो जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया था उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से अरेस्टेशन हो रहा है. Now each primary oocyte will get surrounded by layer of granulosa cells, जो मैंने आपको बताया ना कि डिपोजिशन होगा granulosa cells का around the primary oocyte, तो वो फिर एक दूसरे ही फॉलिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है and that is considered to be as primary follicle. All right, now a large number of these primary follicles, they degenerate during the phase from birth to puberty. देखो बनने के लिए तो millions of gamete mother cells बनते हैं, millions of primary oocyte भी बनता है, लेकिन birth से puberty तक आते आते, ठीक है, from birth till puberty, वहां तक आते आते इनका जो नंबर होता है वो काफी रिड्यूस हो जाता है because there is degeneration in the primary oocyte. So the process of degeneration of primary oocytes that is called, or that phenomena is called atresia. इसको हम atresia बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है that this is primarily called as atresia. ठीक है, so therefore at puberty तक आते आते सिर्फ 60,000 to 80,000 primary follicles ही रह जाता है ओवरी में. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. Now the primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca are formed and that is called secondary follicle. मैंने जो आपको जो successive stages बताए वही successive stages यहाँ पे mention है. ठीक है, अब जो फाइनल हमारा फॉलिकल बना था, फाइनल फॉलिकल जो बनेगा that is considered to be as the tertiary follicle. फाइनल फॉलिकल कौन सा फॉलिकल हो गया? टर्शियरी फॉलिकल. क्लियर? नाउ टर्शियरी फॉलिकल के दो फीचर्स होते हैं. एक तो इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन होगा which is the fluid filled cavity or space, और दूसरा हो जाएगा थीका लेयर्स का फॉर्मेशन. थीका लेयर्स फॉर्मेशन विल बी देयर. तो थीका लेयर्स में दो थीका लेयर्स बनते हैं इसमें, दैट मीन्स theca interna and theca externa. तो ये दो लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स theca interna and theca externa. Now इसमें आप देख सकते हैं that the secondary follicle soon transforms into tertiary follicle, which is characterized by a fluid filled cavity called antrum, and the theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. So it is important to draw your attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. अब वो complete करेगा first meiotic division को, और जब वो first meiotic division को complete करता है, which is an unequal division, that will result into the formation of a larger haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. तो वो tiny first polar body ultimately बनाएगा, जो मैंने आपको already बताया flow chart में. Now, जो secondary oocyte होता है ना, that secondary oocyte, it retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Secondary oocyte का खास बात ये होता है ना कि इसमें nutrient-rich cytoplasm बहुत ज़्यादा होता है, and since it contains variable amount of nutrient-rich cytoplasm, for that reason, this is considered to be as one of the additive advantage आप बोल सकते हैं कि वो उसके अंदर से जो ओवम का नरिशमेंट होता है that is very very proper. So that is the importance
कि सेकेंडरी oocyte को कभी कभी हम ओवम भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट इज itself filled with nutrient rich cytoplasm. तो इसीलिए वो secondary oocyte is sometimes also referred to as ovum as well. ठीक है, so this is the case. Now does the first polar body born out, the first meiotic division divides further or degenerate? So generally ये degenerate कर जाता है, it doesn't divide further. All right, तो ये जो होगा at present we are not very certain about this, but tertiary जो follicle होगा वो further change करके अपने आप को convert करेगा Graafian follicle. अब जब डिविजन हो जाता है सेकेंडरी oocyte न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म का हो जाएगा, तो टर्शियरी फॉलिकल फाइनल अपने आप को कन्वर्ट करेगा ग्राफियन फॉलिकल. मतलब ऐसा फॉलिकल जिसमें ओवम आ चुका है एंड अल्टीमेटली वो रप्चर करके ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू ओवम को क्या करेगा, रिलीज करेगा. सो दिस इज द केस. सो सेकेंडरी oocyte forms new membrane called zona pellucida, and for that reason the वो जो जोना पेल्यूसिडा वाला लेयर होता है, क्योंकि वो सराउंड करके रखता है, तो वो जोना पेल्यूसिडा लेयर इट स्टार्ट्स डेवलपिंग अराउंड दी ओवम. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको ये पार्ट दिखाऊं, यू कैन सी लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एज वेल. क्रॉस सेक्शन होगा. Just a moment, it's being uploaded. तो थोड़ा सा तो बेसिकली ओवम के स्ट्रक्चर में जनरली हमें जो दिखता है वो ये प्रोसेस ओवरी के स्ट्रक्चर में, इनफैक्ट ओवरी के स्ट्रक्चर का अंदर का सेक्शन आप देखेंगे ना, तो देयर विल बी डिफरेंट यू कैन से बोल सकते हैं हम कि अलग अलग ना फॉलिकल्स ही आपको दिखेंगे. यू नो व्हाटएवर द डिफरेंट फॉलिकल्स दैट वी हैव स्टडीड, वही सारे फॉलिकल्स इसमें दिखना शुरू हो जाते हैं. Taking a little time. Okay, so this is the structure of the ovary which you can see over here. All right, तो इसमें और इसमें आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं basically that how it goes. and यहाँ पे आप देखेंगे ना, you can see basically यहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल से ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, these are all primary oocyte. ये सारा का सारा प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर है. प्राइमरी oocyte के अराउंड में ग्रैन्युलोसा सेल्स की डिपोजिशन हुई, so that has ultimately resulted into formation of primary follicle. वो primary follicle ultimately बनाया है. All right, now ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जब डेवलप हुआ तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाया. सेकेंडरी फॉलिकल से अल्टीमेटली हमारा टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम ये बना.
एंड टर्शरी फॉलिकल फाइनली ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हुआ है. सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं व्हिच यू कैन सी, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा दिख रहा है हमें. ठीक है, सो दीज आर, लेट मी शो यू, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर ऑल दी प्राइमरी oocyte. ये प्राइमरी oocyte हो जाएगा. ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हाँ ये प्राइमरी oocyte हो गया. ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस बिकम्स द प्राइमरी फॉलिकल. ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर हो जाएगा. दिस बिकम्स द सेकेंडरी फॉलिकल. Here this becomes the tertiary follicle, क्योंकि इसमें एंट्रम अब दिखना शुरू हो चुका है, एंट्रम थीका लेयर्स बनना शुरू हो चुका है. So this becomes tertiary follicle. And this finally becomes our graphian follicle. ये ग्राफियन फॉलिकल है. अब ग्राफियन फॉलिकल के सेंटर में आप देख सकते हैं that you can see the presence of ovum over here, है ना. And ovulation process के through ovum बाहर निकल चुका है. This is basically the process of ovulation that has resulted into the release of ovum from the graphian follicle. और ये जो green yellow like structures आपको masses दिख रहे हैं ना, these are considered to be as corpus luteum. इनको हम corpus luteum consider करते हैं. That means whatever the portions that are remained, है ना, मतलब ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग्स होता है ओवम को रिलीज होने के बाद, वो एक येलो मास में चेंज हो जाता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है. दैट्स व्हाट. ठीक है, सो यू कैन सी द कॉर्पस ल्यूटियम दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर, ये ओवम का रिलीज यहाँ पे बता रहा है. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम दैट वी हैव सीन एंड वी हैव डिस्कस्ड इट. ये वाला पार्ट हो जाएगा. Clear? So this is all about the sperm structure and oogenesis, and you might have been cleared also with the difference between the spermatogenesis and the oogenesis. Now let us take a look into a very important topic, and that is considered to be as the menstrual cycle. And a menstrual cycle की हम बात कर लेते हैं. Now menstrual cycle is one such cycle which is considered to be as a reproductive cycle. ये basically reproductive cycle में आता है, जिसका importance ये होता है that without which the process of pregnancy, fertilization, fertilization, implantation, pregnancy, embryonic development, all these things cannot be carried out. So that's why this is actually considered to be as one such process जो कि बहुत ही crucial role play करता है females के reproductive system को carry out करने के लिए, reproductive cycle को carry out करने के लिए. ठीक है, so point wise हम देखेंगे. So menstrual cycle जिसको हम reproductive cycle भी consider करते हैं. So that's why this is also considered to be as reproductive cycle. So basically इसका दो phase होता है, एक onset होता है और एक offset होता है menstrual cycle. Onset कहने का मतलब start हो जाएगा और offset का मतलब हो जाएगा stop. So this is start of the menstrual cycle. And this is stoppage of the menstrual cycle. So the start of the menstrual cycle basically is known as, this is called or this is known as menarche. इसको हम menarche बोलते हैं. And this offset is primarily called as menopause. इसको हम menopause बोलेंगे. Clear? So this basically begins at puberty. Menarche जो होगा मतलब onset जो होता है, this basically begins at puberty in the female. That means at an age of around 13 or 14. तो एज होता है यूजुअली 13 और 14 का होता है. एंड मेनोपॉज जो होता है यूजुअली सीजन्स अराउंड 45 इयर्स ऑफ एज के आसपास मेनोपॉज फीमेल्स में ऑब्जर्व होगा. ठीक है, नाउ इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो मैंने आपको बताया कि मेनार्क उसको हम बोलेंगे. ह्यूमन फीमेल्स में द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड at an average interval of around 28 to 29 days. तो उसका जो ड्यूरेशन होता है it is usually 28 to 29 days का ड्यूरेशन होता है, क्योंकि हम पूरा मंथ देखो, there is a difference between menstruation and menstrual cycle. menstrual cycle पूरे महीने के साइकिल को बोला जाएगा. ठीक है,
बट जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ मेंस्ट्रुअल फ्लो को लिया जाएगा, जो कि सिर्फ 3 से 5 दिनों का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो एंड द cyclic events that basically starts from one menstruation till the next, that is called menstrual cycle. उसको हम menstrual cycle consider करेंगे. Now one ovum is released during the middle of the each menstrual cycle. मतलब अगर 28 से 29 days का menstrual cycle है तो उसका जो middle cycle है, that means 14th और 15th day वाला जो cycle हो जाएगा, mid day हो जाएगा, उसके mid day में एक ovum का release होता है. मतलब in 1 month only one ovum is released, and that too by the ovulation process. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. Now let us take a look into the features also and in the level of hormones also, कि क्या क्या processes कैसे कैसे होते हैं, ठीक है. So basically 4 menstrual cycle की जब हम बात करते हैं ना, so there are basically 4 phases of menstrual cycle. इसके 4 phases होते हैं, ठीक है. Menstrual phase, then follicular phase, जिसको हम proliferative phase भी बोलते हैं, third is luteal phase, third is ovulatory phase, which is also considered to be the phase of ovulation, and the fourth is considered to be as luteal or secretory phase. So these are basically the 4 phases of the menstrual cycle, ठीक है. menstrual phase जो होता है ये usually 3 to 5 days का होता है, ठीक है. follicular और proliferative phase जो होता है, this basically आपका अराउंड 6 to 13 days, 6 to 13 डे तक के लिए होगा. ओव्यूलेटरी फेज जो होगा ये 14th और 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंडिकेट करता है. एंड ल्यूटेल और सेक्रेटरी फेज हो जाएगा ये 16th डे टू 27 और 28th डे तक कंटिन्यू करेगा, ये चीज, ठीक है. तो मतलब हर फेजेस के जो डेज है ना वो एकदम डिफाइंड एंड कन्फाइंड है, ऐसा है, ठीक है. सो यू कैन सी, सो बेसिकली आप देख सकते हैं दैट मेंस्ट्रुएशन फेज 3 to 5 days का हो जाएगा, where the menses takes place. Then there is proliferative phase और follicular phase, जो कि usually आपका 6 से लेकर के ultimately आपका 13th और 14th day तक होगा. Then there is luteal phase और secretory phase, and then the next cycle begins. तो इस तरीके से process जो होता है वो शुरू होता है. Ovulation एकदम बीच में आ जाता है, which is your 14th और 15th day of the cycle, ठीक है. So this is the case. Now अब इसमें जो हमें ध्यान देना है वो ये हो जाएगा कि what are the different major events in a menstrual cycle. Major events में जब हम बात करते हैं, so cycle हमेशा start करेगा, ठीक है, with the menstrual phase when the menstrual flow occurs and it lasts for about 3 to 5 days, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिखता है. Now the question arises कि menstrual flow होता क्यों है, ठीक है. Menstrual flow इसीलिए होता है so that the endometrium which actually lines the uterus, जो मैंने आपको यूट्रस के 3 लेयर्स बताए थे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, आपको याद होगा. तो एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, एंड दैट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. सो इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ दैट एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो ब्लड फ्लो होगा ना वो बेसिकली एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्लड के फॉर्म में आउटसाइड द फीमेल बॉडी रिलीज होता है, एंड फॉर दैट रीजन ये मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर करता है. So it is because of the breakdown of the endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. तो ये हो जाएगा, ठीक है. menstruation क्वेश्चन ये होता है कि menstruation कब होगा, menstruation कब नहीं होगा. menstruation तभी होता है if the released ovum is not fertilized. सीधी सी बात है, अगर ovum fertilized हो जाएगा तो वो pregnancy, वो definitely implantation of pregnancy को promote करेगा, तो उसमें menstruation की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर menstruation होगा तो उस केस में there is no fertilization, then there is no pregnancy. तो 2 conditions आपको ध्यान में रखने हैं. Menstruation occurs only if the released ovum is not fertilized, and lack of menstruation may be indicative of pregnancy. ठीक है, अगर menstruation नहीं हुआ तो this basically indicates that might be the pregnancy का केस हो सकता है.
However, it also might be caused due to some underlying causes like stress, poor health, etc. Menstrual जो हमारा बेसिकली क्या है या जो भी चीजें जस्ट जस्ट या सो बेसिकली इसमें हमारा यही वाला पार्ट हो जाता है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा दैट विल अल्टीमेटली अकर. Just a second. ओके, सो बेसिकली हमारे इस पार्ट में हमने मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख लिया था. नाउ द नेक्स्ट थिंग टू नोट इन दिस पार्ट इज दैट बेसिकली कि हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फेज हो जाएगा दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज. तो प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज होता है जो हमें देखना है. तो इस पार्ट में आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे, सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. व्हाई?
क्योंकि प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है कि एनीथिंग विच हैज डीजेनरेटेड सो दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू अ न्यू फॉर्म। मतलब जो एंडोमेट्रियम हमारा डीजेनरेट हुआ था वो एंडोमेट्रियम का अब रीजेनरेशन होना जरूरी है। सो उस एंडोमेट्रियम का रीजेनरेशन तभी होगा जब certain hormones are being released. So follicular phase जो होता है, which means this phase which you can see over here, इसमें दो चीजें होती हैं follicular phase में। दो चीजें हो जाएंगी। The first one is development of ovarian follicle. तो जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल मैंने आपको बताया था ना, वो सारे फॉलिकल्स इसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। So there is development of ovarian follicles, and apart from that there is regeneration of the endometrium that has degenerated. ठीक है, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, regeneration होगा endometrium, there is regeneration of endometrium। और इस दोनों प्रोसेस के लिए, ये जो दोनों प्रोसेस है ना, इन दोनों प्रोसेस के लिए जो दो हार्मोन्स जिनका लेवल, इनफैक्ट द सिंगल हार्मोन whose level is highly increased is because of the estrogen. एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसका लेवल इस पॉइंट पे ज्यादा हो जाता है। तो यू कैन सी ओवर हियर कि इस पार्ट पे एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एलएच का भी अगर आप लेवल यहाँ पे देखेंगे ना, तो एलएच का यहाँ पे भी लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। तो दो हार्मोन्स बढ़ते हैं, एक तो एस्ट्रोजन जिसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ एलएच। एलएच भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है यहाँ पे। तो ये दो हार्मोन्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगेन वी कैन सी विद दिस पार्ट कि यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा नोट करने वाला, वो बेसिकली ये हो जाएगा that the menstrual phase is followed by follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grows to become fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. जो दो मैंने आपको बताया. Now these changes in the ovary and the uterus, they are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones. ठीक है, तो इसमें जो secretion होता है LH हार्मोन का, सॉरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, एलएच हार्मोन का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो दोनों मिल करके एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो वो काफी बढ़ जाता है। सो दैट इज द केस। तो दोनों, जिसे यहाँ पे बोला ना गोनाडोट्रोफिन, जैसे कि एलएच एंड एफएसएच, दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग द follicular phase, and that is going to stimulate follicle development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. तो मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, ये जो एलएच एंड एफएसएच होते हैं, दे अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल व्हिच इज द 14th डे। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से वी विल गो बैक टू दिस फिगर, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये 14th डे वाला फेज होता है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिस इज द 14th डे, ठीक, ये ओव्यूलेशन का फेज है। और इस फेज में जो दो हार्मोन जिनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, दैट इज द एलएच हार्मोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएच हार्मोन जो है ये यहाँ पे पीक लेवल पर आ जाता है, मतलब मैक्सिमम लेवल पर एलएच हार्मोन जो होता है वो पहुंच जाता है। ये पीक पे एलएच हार्मोन का पहुंचना इसलिए जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। So this phenomena is called as LH surge, where the LH hormone attains a very maximum level, which is ultimately responsible for inducing ovulation. क्योंकि LH surge अगर नहीं होगा तो ovulation नहीं होगा, ovum release नहीं होगा। इसीलिए ovum के release के लिए LH surge is very very important. तो ये आपको ध्यान में इसमें रखना है कि कौन से फेज में कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक। तो ये ओव्यूलेशन का फेज हो जाएगा। एंड लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फेज होता है वो ल्यूटेल या सेक्रेटरी का फेज हो जाता है। अब देखिए, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो चुका है, तो जो रिमेनिंग्स होंगे ग्राफियन फॉलिकल के वो तो वेस्ट होंगे नहीं, तो जो रिमेनिंग्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के ना, वो अपने आप को एक येलो मास के स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट कॉर्पस ल्यूटियम इज व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम इज बेसिकली द येलो मास बॉडीड और स्ट्रक्चर्स which are formed as a result of the remnants of the Graafian follicle से जो कि बनता है। Now why this corpus luteum is important? क्योंकि corpus luteum एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है, and that is called progesterone. जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो इसी कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है,
which is responsible for maintaining pregnancy. तो प्रेगनेंसी को अगर मेंटेन करना है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना होगा. अगर प्रेगनेंसी नहीं होना है तो कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा. वहां पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज ही नहीं होगा एंड न्यू साइकिल फिर कंटिन्यू होगा. सो दैट इज द केस. इसमें वही चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं. That rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle, that is called LH surge, that induces the ovulation process, rupturing of Graafian follicle and releasing the ova. Now, the ovulation, which is called the ovulatory phase, is also followed by luteal phase, during which the remaining parts of Graafian follicle transforms as corpus luteum. Now, why luteum is important? Because it secretes large amount of progesterone that is essential for maintenance of endometrium, जिसके बिना endometrium maintain ही नहीं होगा. ठीक. Now such an अगर endometrium maintain होगा तभी implantation हो सकता है, तभी pregnancy हो सकती है. So that is necessary for implantation and other events of pregnancy. Now during pregnancy, all these events of menstrual cycle stops and then there is no menstruation. जितने भी events होते हैं ना, सब रुक जाता है 9 महीनों के लिए, 9 months of pregnancy के लिए, क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं होती. Since the baby has come into the the fetus has come into the uterus, so सारा जो भी processes होगा, जो भी blood होंगे ना, वो उसके nourishment में जाता है. That's all. Now in the absence of fertilization, अगर मान लीजिए fertilization नहीं हुआ तो corpus luteum is going to regress. That means corpus luteum is going to degenerate itself, and this causes disintegration of the endometrium, leading to the next cycle of marking the next cycle of the menstrual cycle. Now, in human beings, the menstrual cycle ceases around 50 years of age. That is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indication of normal reproductive phase that extends between menarche and menopause. मतलब कहने का यही हो गया कि ये जो पूरा process है menstrual cycle का, this is very very crucial in case of the female reproductive system, that happens in the female reproductive system. Why? Because without which the process of fertilization, implantation, pregnancy, embryonic development, gestation, parturition cannot be carried out. So that's why this menstrual cycle plays a very, very key role in the female reproductive system of females or human primates. Okay? So this was all about the menstrual cycle that we have seen. Okay? तो ये वाला हो जाएगा. Next lecture में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे by continuing the process of fertilization and implantation and along with your gestation, parturition and all those things. बहुत सारी चीजें हम देखेंगे and then we are going to finish this chapter. All right. Thank you very much.